ऑलराइट। अब लास्ट सेशन में हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन देखा था, राइट? हमने ये देखा था कि आईएफआरएस एंड आईसीए में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें एसएपी को ये बताना होता है कि फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन आईएफआरएस, लीडिंग लेजर विल बी यूज्ड, आईएफआरएस अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी यूज्ड, एंड इसमें यूएस डॉलर्स एंड आईएनआर दोनों में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, राइट? बिकॉज हमने लीडिंग लेजर में भी लोकल एंड ग्लोबल करेंसी असाइन की थी, एंड नॉन लीडिंग लेजर में भी लोकल एंड ग्लोबल करेंसी असाइन की थी। यानी कि फॉर ईच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम दोनों भी करेंसीज में रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इफ वी सी दिस 0L, कंपनी कोड HNMT, ऑलराइट। हमने ग्लोबल करेंसी टाइप असाइन नहीं किया अब तक, ऑलराइट। अब दिस ग्लोबल करेंसी टाइप, ये ग्लोबल करेंसी आती है फ्रॉम द कंट्रोलिंग एरिया विच इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग मॉड्यूल। अब इस ग्लोबल करेंसी को यहाँ पे लाने के लिए हमें कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी विल गो ऑन अ न्यू स्क्रीन टू डिफाइन कंट्रोलिंग एरिया। Transaction code is OKKP. No. /n OKKP. Now, यहाँ पे we have to see if our controlling area is already defined or not. नहीं हुआ है सर अभी तक। Correct. हमने controlling area अब तक यहाँ पे define नहीं किया है. We will click on new entries. Now, controlling area also, we will use the code as HNMT. Name is controlling area. This is for HNMT. Person responsible. अब जो भी पर्सन रियल टाइम में इस कंट्रोलिंग एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका नाम यहाँ पर आएगा। असाइनमेंट कंट्रोल में इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, सेकंड इज क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ रिमेंबर कि एक कंट्रोलिंग एरिया को एक कंपनी कोड भी असाइन हो सकता है एंड मल्टीपल कंपनी कोड्स भी असाइन हो सकते हैं। अगर आप आपके कंट्रोलिंग एरिया में सिर्फ एक ही कंपनी कोड डिफाइन करने वाले हो, you can select controlling area same as company code. अगर आप मल्टीपल कंपनी कोड्स डिफाइन कर रहे हो, यू कैन सिलेक्ट क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज वी विल सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन विच इज क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। Select this. Next tab is currency settings.
currency type is, now we want this to be a group currency. Group currency के लिए which code we have? Rishikesh, 10. group currency Sorry, 30. 30. अब जब मैंने यहाँ पे ग्रुप करेंसी डाला ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर्स भी आ गया. इन केस अगर यहाँ पर यूएस डॉलर्स नहीं आता है तो यू कैन मैन्युअली एंटर यूएस डॉलर्स. करेंसी और वैल्यूएशन लीव दिस. चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हम कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे HNMT. हैं? नहीं, हमने सारा डेटा HNMO वाले कंपनी कोड से कॉपी किया था एंड देन सिर्फ हमने कंपनी कोड के लिए जो कोड होता है उसको चेंज किया था. करेक्ट? Yes. तो एक्सेप्ट दैट कंपनी कोड everything will be HNMO. So our chart of account is also HNMO. Fiscal year variant, this is group currency. We will be using K4. And this is cost center standard hierarchy. अब ये हम समझेंगे जब हम cost center study करेंगे. For now, we will just add this as HNMT underscore cost center hierarchy. Press enter. It is asking standard hierarchy HNMT underscore CCH does not exist. Should system HNMT CCH be created as standard hierarchy? We will say yes. यानी कि ये जो कॉस्ट सेंटर हायरार्की है हम इसको क्रिएट कर रहे हैं एंड ये पहले से सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है. सो एसएपी इज आस्किंग कि आपको ये क्रिएट करना है, सो वी विल से यस फॉर दैट. Now go to activate components. Activate components or control indicators. Click on new entries. अब our controlling area ये ऑटोमेटिकली आ गया HNMT. फिजिकल ईयर, हम कौन से फिजिकल ईयर से इस कंपनी कोड को यूज कर रहे हैं? 2025. 2025. अब यहाँ पे एक्टिवेट कंपोनेंट्स का एक टैब है. वी हैव कॉस्ट सेंटर्स हियर, वी हैव एक्टिविटी टाइप, वी हैव इंटरनल ऑर्डर मैनेजमेंट, we have commitment management, we have activity based costing, we have we have profit analysis. Now what we will, okay, हम इसको अभी भी component not active रखते हैं. Let's see what happens. And in indicators में से we will select sales order, cost objects and workflow commitment management. Again press enter. Fiscal year 2025 to all lines. अब ये all lines autofill हो गया. Go to the next tab, assignment of company code. अब हमें इस कंट्रोलिंग एरिया को हमारा कंपनी कोड असाइन करना है. नाउ मल्टीपल कंपनी कोड्स कैन बी असाइंड टू वन कंट्रोलिंग एरिया. Click on new entries. Our company code is HNMT. Press enter. This is Honda Motors. If you want, you can assign HNMO. Do you want to change the fiscal year variant in controlling area HNMT and in the master data of the company codes? अब HNMO वाले कंपनी कोड का जो फिजिकल ईयर वेरिएंट है दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. So SAP is asking that do you want to change the fiscal year variant? We will say no.
if you assign multiple company codes to one controlling area, you have to make sure कि उन सारे कंपनी कोड्स का सेम फिजिकल ईयर हो. इफ इन कंट्रोलिंग एरिया हम K4 यूज कर रहे हैं, तो ये सारे कंपनी कोड्स का भी फिजिकल ईयर वेरिएंट K4 होना चाहिए, या अप्रैल टू, आई एम सॉरी, K4 होना चाहिए, या जनवरी टू दिसंबर होना चाहिए. So we will delete this company and we will press enter. ठीक है, ये चीजें समझ गई. यस सर। अब एक्टिवेट कंपोनेंट्स में हमने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है. ये जब हम एक्चुअल कंट्रोलिंग पे जाएंगे तब हम इसको देखते हैं. क्लिक ऑन सेव. Currency type 30 added as additional FI currency for company code HNMT. Continue. Critical transport control indicator in controlling area. Continue. Ab controlling area has been created. Now let us go back to FINSC underscore LEDGER ledger. For ledger 0L, which is a leading ledger, let us check कि यहाँ पे ग्रुप करेंसी ऐड हुई है या नहीं. If you see, यहाँ पे अब दो करेंसीज रिफ्लेक्ट कर रही है. वन इज लोकल करेंसी एंड अनदर इज ग्रुप करेंसी, राइट. अब लोकल करेंसी इज करेंसी टाइप 10 विच इज कंपनी कोड करेंसी, एंड हमारी कंपनी कोड करेंसी इज इन INR. If you see the source currency type, this is all zeros. Now this all zero represents डॉक्यूमेंट करेंसी, यानी कि जो भी करेंसी में हम डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे उस करेंसी को एज अ सोर्स करेंसी लिया जाएगा टू कैलकुलेट दिस कंपनी कोड करेंसी. इफ वी एंटर अ डॉक्यूमेंट इन INR, तो INR टू INR ही आएगा. इफ वी एंटर डॉक्यूमेंट इन लेट्स से यूरोज, नाउ 1 euro is equal to around 90 rupees. So with the help of exchange rate, document currency which is 1 euro, it will be converted to INR, which will become 90 rupees. ठीक है. This is basically the source currency. सर Okay. इसमें अगर ये सिनारो में अपनी कंपनी इंडिया में जो मतलब बिलोंग करती है, इसके लिए अपने ये जो करेंसी टाइप है तो वो अपने इंडियन है. इफ केस अगर अपनी कंट्री बिलोंग करती थी यूएसडी डॉलर में, हम्म. मतलब अपना जो भी है वो यूएसए में है, तो उस वो टाइम पे लोकल करेंसी अपने यूएसडी आएगा वहाँ पे. Yes. और फिर ये जो ग्लोबल करेंसी आएगा तो फिर उसमें जहाँ पे अपन बिजनेस कर रहे हैं वो नहीं, आपकी फिर. लोकल करेंसी भी US डॉलर्स आएगी एंड हाँ. ग्लोबल करेंसी भी US डॉलर्स आएगी. सी, आप इसको SAP पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना. इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ कंट्री विच इज US, यस. ठीक है, आप वहां पे US डॉलर्स में ऑपरेट करोगे, यानी कि आपकी जो लोकल करेंसी होगी दैट विल बी US डॉलर्स, यस. राइट. जो कंपनी कोड लेवल पे आप डिफाइन करोगे इट विल बी US डॉलर्स. अब ग्लोबल करेंसी क्रिएट करने का क्या रीजन था कि कंपनी को ये जानना होता है कि ओवरऑल उनका हर एक कंपनी कोड को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, राइट. यस. अब जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन सा करेंसी में होते हैं? यूएसडी में.
यूएसडी में होते हैं। हम्म, तो जब कंपनी को कंबाइंड बैलेंस शीट या कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, तो दे विल जनरली यूज यूएस डॉलर्स, राइट, क्योंकि दैट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग यूएस डॉलर्स। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि दे वांट टू यूज यूएस डॉलर्स और दे वांट टू यूज सम अदर करेंसी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूएस डॉलर्स ही यूज करती है। ओके सर। Okay, so your local currency will also be US dollars. Your global currency will also be US dollars. Both currencies are fulfilling different requirements. ओके सर। अब लोकल करेंसी के लिए हमने सोर्स करेंसी टाइप दिया। सोर्स करेंसी टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है, विच इज 00। दिस स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट करेंसी। एक्सचेंज रेट टाइप इज M. This is also by default standard translation at average rate. And translation date type is translation date. But for global currency, there is no source currency type. There is no exchange rate type. What is exchange rate? If we want to translate this local currency from the source currency, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि इफ इट इज 1 यूरोज, तो एसएपी को ये नहीं पता कि 1 यूरोज इज इक्वल टू 90 रुपीज। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करने होते हैं। उन सेटिंग्स में हम एक्सचेंज रेट टाइप देते हैं फॉर ईच डेट, एंड फ्रॉम दैट एक्सचेंज रेट, दिस एक्सचेंज रेट टाइप इज टेकन, विच इज स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट। उस दिन का जो भी एवरेज रेट होगा, उस हिसाब से ये कंपनी कोड करेंसी डिफाइन होगी। ट्रांसलेशन डेट टाइप, दिस इज ट्रांसलेशन डेट, यानी कि दैट स्पेसिफिक डेट जब हमें ट्रांसलेशन करना होगा करेंसी का। समझ गए ये? यस सर, समझा। अब लोकल करेंसी के लिए ये चार चीजें डिफाइंड है, बट फॉर ग्लोबल करेंसी वी ओनली हैव करेंसी टाइप विच इज 30, बट इसका सोर्स डिफाइन नहीं है, एक्सचेंज रेट टाइप डिफाइन नहीं है, एंड ट्रांसलेशन डेट भी डिफाइन नहीं है। टू डिफाइन दिस, वी हैव an option, currency conversion settings for company codes. We will start from the first tab. This is currency type. If you see 00, this is document currency. 30 is group currency, and 10 is company code currency. ठीक है, यहाँ पे सारे currency types already defined है. If you want, you can define your own currencies as well. Now next tab is global currency conversion settings. यानी कि global level पे जो currency conversion है, वो हम यहाँ पे define कर सकते हैं. Now this Y9, YA, YB, this is created by the users. This is not SAP provided. ठीक है, SAP provided ऊपर वाले करेंसीज है, which is 10, 11, 12, 20, 31, 40, 70. अब हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग वन कंपनी कोड. नेक्स्ट इज currency conversion settings for company codes. Now this tab is at company code level. Double click, continue. Position, company code HNMT. Enter. हमें HNMT वाला आउटपुट नहीं आ रहा है, मीनिंग इट इज नॉट क्रिएटेड. क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. कंपनी कोड इज HNMT. अब ये जो ब्लू फील्ड्स है, जब हम डेटा एंटर करेंगे ये ऑटोफिल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज दिस करेंसी और वैल्यूएशन टाइप.
नाउ यहाँ पे वी आर यूजिंग ग्रुप करेंसी विच इज 30। ये जो पार्ट हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज फॉर ग्रुप करेंसीज। जो हम ग्रुप करेंसी यूज कर रहे हैं दैट इज करेंसी टाइप 30 एंड द करेंसी इज यूएस डॉलर्स। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर टारगेट करेंसी। नाउ फ्रॉम दिस नेक्स्ट कॉलम दिस इज योर सोर्स करेंसी। अब to define our group currency, we want to take source currency as our company code currency, which is INR. So double click on this. Exchange rate type. There are multiple exchange rate type. हम standard average rate select करेंगे, which is M, and translation date type B. We will select translation date. Now press enter. Okay, for Honda Motors, we are defining group currency, which is US dollars. Source currency type will be company code currency. Exchange rate type is standard average price, and translation date type is also translation date. Go back to ledgers. Continue. 0L. Now for company code HNMT, global currency type is 30, source currency type is 10, exchange rate is M, and translation date type is 3, which is translation date. ठीक है, अब we will save this. Go back to ledgers. Now 0L is our leading ledger. हमने नॉन लीडिंग लेजर भी एक डिफाइन किया था, करेक्ट? ऋषिकेश, आप हो? Now, what was our non-leading ledger? We will search for HN in SAP. Go to company code settings. Up for this ledger HN in company code HNMT, currency type is 10, company code currency. Source currency type is 00, which is document currency. Global currency type 30 and source currency type is 10. राइट, जैसे ही हमने लीडिंग लेजर्स के लिए ये सारी चीजें डिफाइन की, फॉर द नॉन लीडिंग लेजर एज वेल ये चीजें डिफाइन हो गई ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज रियल टाइम कन्वर्जन, ये रियल टाइम में कन्वर्जन होगा करेंसीज का। नाउ वी हैव क्रिएटेड टू लेजर्स, we have two accounting principles, we have two fiscal year variants. Okay, this is basic requirement for starting with asset accounting. अब इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि इफ यू आर यूजिंग टू fiscal year variants, it is giving some error at the time of creation of representative ledger. तो it can happen कि if we could not resolve that error because वो technical error है, अगर वो error resolve नहीं होता है तो what we will do is we will
change our fiscal year variant for leading as well as non-leading ledger to जनवरी टू दिसंबर। जैसे आपने एग्जांपल अभी लिया था कि इफ वी आर ऑपरेटिंग इन यूएस एंड ग्रुप करेंसी भी यूएस होगी, इन दैट केस दोनों भी फिस्कल ईयर वेरिएंट्स भी जनवरी टू दिसंबर होंगे। दैट इज अ लेटर पार्ट। अभी के लिए वी विल मूव ऑन विद द एसेट अकाउंटिंग। अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन देखा था। फर्स्ट पार्ट इन एसेट अकाउंटिंग इज डिफाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको हम सीओडी भी बोलते हैं। नाउ दिस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन defines structure for calculation of depreciation on fixed assets. By structure I mean ये define करेगा ledger plus accounting principal plus currency। ठीक है। Now for asset accounting we can use single transaction code which is ORFA। You can use ORFA or you can go through the path which is SPRO, SAP reference ING, financial accounting, asset accounting, and asset accounting के folder में you will get multiple options, right? Organizational structure, integration with general ledger accounting, general valuation, depreciation, and so on. Now I will enter transaction code ORFA। यहाँ पे you are getting only asset accounting folder and यहाँ पे भी आपको same options मिल रहे हैं। Organizational structures, integration with general ledger accounting, general valuation, depreciation, correct? हाँ सर। Okay. अब chart of depreciation define करने के लिए we have to go in organizational structures, copy reference chart of depreciation or depreciation areas, click on it। asset accounting में in SAP S/4HANA हम chart of depreciation create नहीं कर सकते। we can only copy chart of depreciation। we will go to copy reference chart of depreciation। now first option is display or change, second option is copy organizational object। click on second option from chart of depreciation, open this list। अब इस लिस्ट में आपको मल्टीपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस दिए गए हैं। इफ यू सी फ्रॉम हियर 0 AR is sample chart of depreciation for Argentina, 0 AT is sample chart of depreciation for Austria, 0 BE is for Belgium, CH is for Switzerland, and similarly 0 IN
दिस इज चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर इंडिया। ओके, तो ये जो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज 0 प्लस कंट्री कोड, राइट? फॉर इंडिया वी यूज IN, सो इट इज 0 प्लस IN। अब इफ देर इज सम कंट्री जिसका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ होगा, तो यू विल हैव सम अदर कंट्री जिसका चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन will be similar to the country which you want to define. For India, we will select sample chart of depreciation, India. Now this is from chart of depreciation, yani ki this is a reference to create our own chart of depreciation. To chart of depreciation is our target chart of depreciation. We are creating this as HNMT. Continue. Again, continue. Do you want to transport number ranges? Yes. Chart of depreciation 0IN copied to chart of depreciation HNMT. Continue. This is selected objects. हमने select किया था 0IN. If you go in completed activities, you can see chart of depreciation 0IN copied to HNMT. Okay, now we have copied chart of depreciation. Let us go back. अब यहाँ पे performed पे एक टिक आ गया, यानी कि ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया है। Let us go to the next, which is specify description of chart of depreciation. Double click. अब हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? HNMT. HNMT. For this chart of depreciation, अब हमने 0IN से कॉपी किया था, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली 0IN वाला कॉपी हो गया। Now what we will do is we will edit this description from sample chart of depreciation to just chart of depreciation for HNMT. Save this and go back. Second step is also performed. Third step is copy or delete depreciation areas. Double click on it. Continue. Now if you see, यहाँ पे multiple depreciation areas दिख रहे हैं. Depreciation area 1, 15, 20, 30, 31, 32, 41, 51. Now we can adjust depreciation areas as per the needs. Okay, but this book depreciation area is mandatory. बाकी सारे depreciation areas हम delete कर सकते हैं, but book depreciation area is mandatory. And all these depreciation area will be marked for this indicator, which is real depreciation area. अब हम क्या करेंगे? We will keep this book depreciation and we will delete all other depreciation areas. You can select one by one, या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है select all and deselect all. Now I want to select all of the depreciation areas and I will just deselect this book depreciation and हम इसको delete कर देंगे. Okay. अब हमारे पास सिर्फ depreciation area 1 बचा है, which is book depreciation. Now this book depreciation we want to use for the ledger 0L
This will be used for IFRS, and it will report in both the currencies, but जो रियल टाइम पोस्टिंग्स होगी वो इंडियन रुपीज में होगी, तो वी विल गिव INR. करेक्ट. Yes, sir. Same चीज I have copied and pasted in the next blank. If you see posting in general ledger, एरिया पोस्ट इन रियल टाइम, यानी कि ये रियल टाइम में वैल्यूज अपडेट करेगा. आई विल ट्राई टू सेव दिस. यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि एरिया 01 अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट असाइंड एंड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन HNMT. For this, assign target ledger group to area 01. Now, what this error means is if you select this long text exist, for this, the accounting principle is not completely assigned to depreciation area 01 of chart of depreciation HNMT. So what it is saying कि जो depreciation area हमने define किया है उसमें chart of, I'm sorry, this was for accounting principle, right? जो डेप्रिसिएशन एरिया हमने डिफाइन किया है उस डेप्रिसिएशन एरिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइंड नहीं है. नाउ जब हमने यहाँ पे IFRS दिया था एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ये और कोई काम नहीं करेगा. इफ यू सी डिफाइन डेप्रिसिएशन एरिया, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक टैब मिलेगा, एक फील्ड मिलेगा. नाउ इन दिस फील्ड, इफ यू सिलेक्ट ऑन दिस लिस्ट, if you search for अब for this depreciation area 01, which accounting principle we have to assign? ऋषिकेश, डेप्रिसिएशन एरिया 01 के लिए हम कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर रहे IFRS. हैं? ओके, तो सर्च फॉर IFRS. ओके, स्क्रॉल डाउन. दिस इज IFRS. डबल क्लिक ऑन इट. अब यहाँ पे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर दिया. एंटर. डिस्क्रिप्शंस ऑटोफिल हो गए. अब इफ यू रिमेंबर, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल IFRS के लिए लेजर 0L असाइन किया था. हमारे लास्ट सेशन में हमने ये सेटिंग देखी थी. सो व्हेन वी असाइन दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑटोमेटिकली लेजर भी यहाँ पे ऐड हो गया. नाउ अगेन वी विल ट्राई टू सेव. अब एरर्स नहीं आ रहे. रेड एरर इज गॉन. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 0 एरर. क्लिक ऑन कंटिन्यू. अब हमने डेप्रिसिएशन एरिया 01 को एडजस्ट कर दिया एज पर आर रिक्वायरमेंट. One more thing which we have to do is posting in general ledger. We have to make sure that this is area post in real time for book depreciation. Go back. Now we want key for leading ledger 0L, accounting principle IFRS, reports दो करेंसीज में क्रिएट हो. वन इज लोकल करेंसी, सेकेंड इज ग्रुप करेंसी.
अब ये डेप्रिसिएशन एरिया हमने डिफाइन किया है फॉर द करेंसी INR. What we will do now is we will create one more depreciation area for US dollars. Select this depreciation area, click on this copy option. I will change this from INR to US dollars. This also US dollars. And this will not post in real time. राइट हमें यूएस डॉलर्स में वैल्यूज अपडेट नहीं करने हैं, हमें INR में ही वैल्यू चाहिए, बट यूएस डॉलर्स में वी जस्ट वांट अ रिपोर्ट, सो दिस इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. This will be area does not post. Enter. यहाँ पे we are getting an error that target key must be different from source key, and this area is getting highlighted. यानी कि we already have depreciation area 1 which is used for INR. Now this number should be any other number apart from 1. We can give this as 2, we can give this as 3, we can give this as 10. अब मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया नंबर एंड वी विल प्रेस एंटर. एरर चला गया. नाउ वी विल गो बैक. नो, फर्स्ट सेव दिस. ओके, जब आप एंटर की प्रेस करोगे इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन. अब दो अकाउंटिंग आई एम सॉरी अब दो डेप्रिसिएशन एरियाज क्रिएट हो गए. डेप्रिसिएशन एरिया 1, डेप्रिसिएशन एरिया 2. अब यहाँ पे 2 की जगह आप 5 भी डिफाइन कर सकते हो, आप 15 भी डिफाइन कर सकते हो, आप 20 भी डिफाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे इसके बाद जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एरिया आप डिफाइन करोगे उस डेप्रिसिएशन एरिया का जो नंबर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस number. Now if I am defining number 2, next number should be greater than 2. It can be 3, 4, 5, 6, but ये 1 नहीं हो सकता. ओके, अब हमने दो डेप्रिसिएशन एरियाज क्रिएट किए फॉर लीडिंग लेजर IFRS, एंड हमने दो करेंसीज भी यहाँ पे डिफाइन कर दिए. वन इज INR, वन इज US dollars. Both are used for IFRS only, and target ledger group is also 0L. For posting in general ledger accounting, depreciation area 01 post in real time, depreciation area 02 is area does not post. Now this is for IFRS. अब सेम चीज हमें इंडियन कंपनीज एक्ट के लिए भी करनी पड़ेगी. Copy this depreciation area 1 and change the description from 0L IFRS to HN ICA. Accounting principle is Indian Companies Act, and this is area post in real time. Press enter. Target key must be different from source key. Give this as depreciation area 3. Press enter. Again press enter. Third depreciation area create हो गया for the non-leading ledger, Indian Companies Act, INR. Again copy second depreciation area.
या आप थर्ड डेप्रिसिएशन एरिया भी कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन मेक दिस एज एरिया डज नॉट पोस्ट. इफ आई कॉपी दिस, सर ये ऐसा अपन दो दो बार क्यों कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मुझे। देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर ईच अकाउंटिंग प्रिंसिपल we want reports in Indian rupees as well as US dollars. Correct? ओके। यस। अब यहाँ पे हमने depreciation calculate किया था. IFRS में we had this depreciation as 632 rupees. We have 632 INR. Now what company want is कि ये जो depreciation है वो depreciation कंपनी को US डॉलर्स में भी देखना है just for the reporting. Now let us say in US dollars this depreciation area is 632.88. This is $7.181. करेक्ट, ये डेप्रिसिएशन है फॉर दिस स्पेसिफिक ईयर. अब कंपनी को ये डेप्रिसिएशन आईएनआर में भी देखना है एंड दे वांट टू सी दिस इन यूएस डॉलर्स एज वेल. अब अगर दो अलग अलग करेंसीज है तो उन दो करेंसीज को रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड टू डेप्रिसिएशन एरियाज. दैट इज द रीजन हमने दो अलग अलग डेप्रिसिएशन एरिया डिफाइन किए हैं for the same accounting principle and same ledgers, but currencies are different. समझ गए? यस सर। अब similarly, as per Indian Companies Act, again we will have some value in INR, and company also want to see this value in US dollars. INR में we have this value as 1761. 1761, and US dollars में this is 1761 divided by 88, right? Because 1 US dollar is equal to 88 INR as per the current rate. Press enter. US dollars में this depreciation area is $20.01. Or we will take a round of $20 and this is $7. ठीक है, अब एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट हमने इंडियन रुपीस के लिए डेप्रिसिएशन एरिया डिफाइन किया. वी ऑल्सो हैव टू डिफाइन अ डेप्रिसिएशन एरिया फॉर यूएस डॉलर्स. तो हम इसको कॉपी करेंगे. चेंज डेप्रिसिएशन एरिया फ्रॉम 3 to 4 and change this from INR to US dollars. This also US dollars. And this US dollar is just for reporting purpose. So we will select area does not post. Enter. अब 4 depreciation areas create हो गए, right? 2 depreciation areas for IFRS, currency will be INR and USD, and 2 more depreciation areas for Indian Companies Act. Again, currency will be INR and USD. ये क्लियर हो गया या इसमें कुछ डाउट है? नो सर। Okay. Now save this. Data was saved. Go back. Close this. अब ये 3 steps हमने परफॉर्म कर दिए. Okay, now our chart of depreciation has been defined. अब हम इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड से लिंक करने के लिए ट्राई करते हैं. गो टू असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड.
position. Our company code is HNMT. For HNMT company code, we are assigning chart of depreciation, which is also HNMT. Enter. We got the description. हम इसको सेव करने के लिए देखते हैं. एरर आ गया. First error is regarding the currency. Second error is chart of depreciation HNMT. Ledger JU is not defined in company code HNMT. Second error हम बाद में देखते हैं. Let us look at the first error. Parallel currency area, currency type 30 missing. For area 01, chart of depreciation HNMT. Open this. Okay. Click on continue. Go back. Do you want to save the data? No. Go to chart of depreciation. अब यहाँ पे what is happening is हमने दो अलग-अलग करेंसीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, राइट? वन इज INR, वन इज US डॉलर्स. लेकिन अगर हम इसके अंदर जाएं, यहाँ पे हमने कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया है कि इस डेप्रिसिएशन एरिया के लिए INR यूज होगा, राइट? यहाँ पे हमने जस्ट INR टाइप किया है, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन. लेकिन यहाँ पे कोई हमें फील्ड नहीं मिल रही है टू डिफाइन दी करेंसी टाइप और करेंसी. सिमिलरली फॉर डेप्रिसिएशन एरिया 02 एज वेल, उसमें भी हमने कोई करेंसी डिफाइन नहीं किया. नाउ टू डिफाइन दिस करेंसी, टू मेक SAP understand that we are using two different currencies, we have to make a setting. Go back. Close this organizational structure and go to general valuation. अब general valuation में you have something called as currencies. Open this. Second option आपको मिलेगा specify the use of parallel currencies. अब हम दो currencies use कर रहे हैं parallelly, so we have to specify their uses. Execute. अब जो डेप्रिसिएशन एरियाज आपने डिफाइन किए थे इन योर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो सारे डेप्रिसिएशन एरियाज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट? एरिया 1, 2, 3 एंड 4. इफ यू सी एरिया 1, दिस एरिया इज ग्रेड आउट, राइट? ये वाला एरिया एडिटेबल नहीं है. अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट करूं, इट इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. एरिया 02, यहाँ पे वी हैव एडिटेबल फील्ड विच इज करेंसी और वैल्यूएशन टाइप. अब हमने ये देखा था कि US डॉलर्स में वी आर जस्ट क्रिएटिंग इट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. इसका कोई रियल टाइम पोस्टिंग नहीं होगा, राइट? अब जो भी वैल्यूज US डॉलर्स में हम लेंगे, वो सारे वैल्यूज कहाँ से आएंगे? INR से. INR से, हाँ. यानी कि एरिया 01 से, करेक्ट? यस सर. Open this drop down. Now US dollar is our local currency or our group currency. ग्रुप करेंसी. Select group currency.
next column is adoption of values from depreciation area. So basically यहाँ पे हमें ये define करना है कि for depreciation area 02 हमें कौन से depreciation area से values copy करने हैं for this specific depreciation area. अब हम कौन सा depreciation area से values copy कर रहे हैं? 01. 01. So we will give this as 1 and depreciation terms transfer. Ab if we are copying valuation from area 01, we will also copy depreciation terms from area 01 or area 1. ठीक है? Yes. Okay. Now you have this indicator here and here, which is identical. You have to mark this indicator. ये हम इसलिए mark करें because we are specifying कि area 02 or area 2 is similar to this area 1. एंड एक बार आपने ये इंडिकेटर सिलेक्ट कर दिए तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ओके. अब फॉर एरिया 3 विच इज नॉन लीडिंग लेजर इंडियन कंपनीज एक्ट INR, करेंसी और वैल्यूएशन टाइप ग्रेड आउट है. नाउ व्हाई इज दिस ग्रेड आउट? दिस इज बिकॉज हमने एरिया 1 एंड एरिया 3 के लिए जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था दैट वाज एरिया पोस्ट इन रियल टाइम. राइट. ये खुद के वैल्यूज पोस्ट करते हैं. ये दो एरियाज को कहीं से कोई वैल्यू कॉपी करने की जरूरत नहीं है. दैट इज वाई हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है. दिस ऑप्शन इज ग्रेड आउट. ये समझ गए? Yes, sir. ओके. अब डेप्रिसिएशन एरिया 3 which post in Indian Companies Act and in INR. For this value adoption, अब ये एरिया 3 कहीं से वैल्यू अडॉप्ट करेगा या खुद के वैल्यूज पोस्ट करेगा? 01 से अडॉप्ट करेगा ना. अगर ये डेप्रिसिएशन एरिया 01 से वैल्यूज अडॉप्ट करेगा तो इट विल बी रिपोर्टेड इन IFRS. राइट. अगर IFRS में परसेंटेज मेथड यूज हो रहा है एंड अगर इंडियन कंपनीज एक्ट में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मेथड हम यूज कर रहे हैं फिर तो रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी ना. हाँ सर. राइट. क्योंकि वो IFRS और ये अपना इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं ना. सॉरी. 01 जो है वो IFRS के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करेगा डेप्रिसिएशन. करेक्ट. और 3 नंबर वाला जो है वो इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से करेगा. करेक्ट. तो जो डेप्रिसिएशन एरिया 3 है वो कहीं से वैल्यूज अडॉप्ट नहीं करेगा. इट विल पोस्ट इट्स ओन वैल्यू. तो ये जो वैल्यू अडॉप्शन है ये हमें 0 करना पड़ेगा. नाउ टू मेक दिस एज 0, what I will do is I will press backspace and I will hit the enter key. अब ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया. अगर आप मैन्युअली 0 एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है. ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट select this, press backspace and hit the enter key. Now depreciation area 3 हमने सेट कर दिया. Let us move to area 4. This is non-leading ledger ICA in US dollars. Now again US dollars is our group currency. अब area 4, this will adopt the values or it will post its own values? ये अडॉप्ट करेगा सर 03 का. 03 का अडॉप्ट करेगा. ओके. डेप्रिसिएशन टर्म्स भी 03 से आएंगे and we will select this indicators again. ये क्लियर है?
Yes, sir. Save this. Now we will go back. Again, go to organizational structure, copy, I'm sorry, assign chart of depreciation to company code. Our company code is HNMT and chart of depreciation is also HNMT. अब हम इसको सेव करने के लिए ट्राई करते हैं. Configuration for combination of ledger GU in company code HNMT is missing. Okay, ये error आपको नहीं आएगा. Just let me rectify this. So basically what is happening is, wait, कभी कभी जब ऐसे एरर आता है ना सर, एक दो मिनट तो एरर समझ में आता है अपने को। starting में ऐसे ही होता है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा. अब it is saying that company code HNMT is not assigned to ledger JU. जब हमने कंपनी कोड HNMT डिफाइन किया, जब हमने इसके लिए लेजर्स डिफाइन किए, हमने कौन कौन से लेजर्स डिफाइन किए थे? वन वाज लीडिंग, वन वाज नॉन लीडिंग. उनके कोड्स क्या थे? एक लीडिंग लेजर का था 0N था और नॉन लीडिंग का HN था। राइट. यस। हमने JU नाम का कोई लेजर डिफाइन नहीं किया था इस कंपनी कोड के लिए. यस। राइट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ledger JU में it is saying that this specific company code is missing. Let us go to ledger settings. आप उस लिंक से भी जा सकते हो. Financial accounting global settings. This is defined settings for ledgers and currency types. Search for ledger JU. Go to company code settings. We do not have any ledger assigned here. Configuration for combination of ledger JU and company code HNMT is missing, but we do not want this ledger to get assigned to our company code. This ledger was defined by me only. So what we will do is we will delete this ledger. Save. Ledger group JU with single ledger JU deleted. Okay. अब जब आप प्रैक्टिस करोगे आप रैंडमली कोई भी लेजर्स डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो सारे लेजर्स किसी और यूजर्स से यूज हो रहे होंगे. नाउ दिस JU लेजर, इसको मैंने ही डिफाइन किया था. दैट इज द रीजन आई हैव डिलीटेड इट. Go back. Again, go to assign chart of depreciation to company code. Enter your company code. Enter chart of depreciation. Save. अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा है कि ledger HN defined in company code HNMT is not active in chart of depreciation HNMT. Let us go back to our chart of depreciation.
प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था। फॉर दिस इंडियन कंपनीज एक्ट, बाय डिफॉल्ट जो लेजर असाइंड है दैट इज जे यू, बट वी वांट दिस टू बी एच एन, करेक्ट? बिकॉज यस, हम हमने जो लेजर डिफाइन किया है दैट इज एच एन। नॉन तो लीडिंग वाला बोलना। करेक्ट, what we will do is we will go to financial accounting global settings, ledgers, parallel accounting, assign accounting principles to ledger groups, search for Indian Companies Act. See, this is non-leading ledger for JUGR. Change this from JU to HN and press enter. Save this. अब फिर से हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, दिस इज कॉपी रेफरेंस, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. Now again, I will select this field and I will press enter. Not working. Remove this. Again, I will enter ICA. Ledger change हो गया. Same thing मैं depreciation area 4 के साथ भी करूंगा. I will remove the accounting principle and I will enter it again. अब हम सिर्फ accounting principles edit कर सकते हैं, right? Target ledger group हम edit नहीं कर सकते. ये वाली field grayed out है. अब जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल देंगे तो ऑटोमेटिकली विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेजर्स हमने असाइन किए हुए हैं, दैट सेम लेजर्स विल रिफ्लेक्ट हियर. ICA एंटर. अब चेंज हो गए लेजर्स. नाउ इवन इफ वी डिलीट द लेजर JU, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. वी विल सेव दिस. Select this ledger and I will delete this. Save. ओके, अब हम फिर से ट्राई करते हैं टू असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड. अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि फिस्कल ईयर वेरिएंट इन कंपनी कोड HNMT have different start dates. Now it is saying that first the first day of the fiscal year variant of representative ledger in ledger group in company code HNMT differs from first day of fiscal year variant of representative ledger in ledger group. Okay, ignore this. Now just focus on this line. Okay, fiscal year variant in company code HNMT have different start dates. Now we already know कि हम दो fiscal year variants use कर रहे हैं, right? January to December and April to March. यस। दोनों की starting dates अलग हैं. हाँ। That is the reason ये error हमें आ रहा है. Now to resolve this error, what we will do is we will create one more ledger which is called as a representative ledger. This is a representative ledger. Now this representative ledger is combination of non-leading ledger and
we will add one more ledger which is just like a dummy ledger. ठीक है, इसमें हम कोई वैल्यूज वगैरह नहीं देखेंगे, बट जस्ट टू रिजॉल्व द एरर हम और एक लेजर को ऐड करेंगे. Okay, so this representative ledger, I'll write it like non-leading ledger plus a dummy ledger. Okay, go to SAP. Now go back to ledger settings. अब लेजर सेटिंग्स में हम फिर से एक नया लेजर क्रिएट करेंगे. Let us create as HR. This R will represent representative. Continue. There is no HR new entries. Ledger HR. Ledger name is representative ledger for HNMT. Press enter and we will just assign our company code to this ledger. Now what is happening is इस रिप्रेजेंटेटिव लेजर में जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है वो बाय डिफॉल्ट कॉपी हुआ है फ्रॉम द लीडिंग लेजर. नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज फॉर नॉन लीडिंग लेजर वी वांट fiscal year variant as April to March. For leading ledger, we want fiscal year as January to December. Correct? Yes, sir. No. अब लीडिंग लेजर के लिए we already have January to December. But for this non-leading ledger, जब हम April to March असाइन कर रहे हैं to ledger HN, जब हम April to March असाइन कर रहे हैं तो हमें चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड से असाइन करते वक्त एरर आ रहा है कि there are two different fiscal year variants. To overcome this error, we are creating this representative ledger. अब इस representative ledger में one is dummy ledger and second is non-leading ledger. Correct? अब SAP हमें क्या error दे रहा है कि for the specific ledger, fiscal year variants are different. Let me open this. Right? To overcome this error, हमने एक ledger group create किया है. Okay? Ledger group हमने create किया जिसमें हम दो ledgers असाइन करेंगे. One with fiscal year April to March, one with fiscal year January to December. अब इवेंचुअली हमें एरर ओवरकम करना है which is fiscal year variants are different. If we are assigning two ledgers to one ledger group and then we assign that ledger group to accounting principal, तो उस लेजर ग्रुप में ऑलरेडी जनवरी टू दिसंबर का फिस्कल ईयर आ जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. ओके. नाउ सेव दिस.
अब हम जो 2 लेजर्स हमने क्रिएट किए हैं, वन इज़ नॉन लीडिंग लेजर, वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव लेजर, उसका हम एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। Go to Financial Accounting Global Settings, Ledger, define ledger group, and we will create a new entry for this ledger group, HNMT. Description: this is a representative ledger for HNMT, which is a combination of HN plus HR. इसमें कोई कंफ्यूजन है? Okay. Select this entry and go to ledger assignment. अब यहाँ पे हम 2 अलग-अलग ledgers ऐड करेंगे. Click on new entries. First ledger is non-leading ledger, which is HN. Second ledger is representative ledger, which is HR. Now for this HR, we will mark this representative ledger indicator and we will click on save. यहाँ पे हमें एक warning message आ रहा है, currency or valuation type does not exist. If I press enter, यहाँ पे हमें technical error दे रहा है. And the error is the activation mode is set to abort at program level. यानी कि इस representative ledger का जो activation है, इसको प्रोग्रामिंग में ही डीएक्टिवेट किया गया है, अबॉर्ट किया गया है. सो दिस इज द टेक्निकल एरर जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था.